All right, class. Bismillah Rahman Rahim. This is Sir Adeel Fazlani, O-level mathematics teacher. Today, the workshop has been meant to revise the concepts of you guys, since you already have learned the inequalities, the coordinate geometry before in previous years. So, I already have given you the coordinate geometry introduction. However, let me recap the concept of the coordinate geometry. Those who have missed out on on-site classes, for for them, there is a vital opportunity to once again to catch up with the lesson that they have missed out, right? So let me share the screen, and as soon as you can see the screen, just intimate me, and just hold on. All right, class. Can you see the screen now? Yes or no? No, sir. Still not? अब आ गई. Just, all right. So, see, the coordinate geometry is the basic topic. Before going to proceed to the actual topic, that is a linear graphing of linear inequalities, you should have a strong background. Since on-site class is already being done for the coordinate geometry, and you will get a quick review of the coordinate geometry, right? So the first slide is the distance between 2 points. So, yes, class. So you tell me that what is the way to find out the distance between 2 points? What are the options that you need to find? Shall I count the diagonal boxes to find out the distance, or is there any other mathematical way or being taught to you to find out the distance between 2 points? Yes, anyone, please. Sir, there is a formula, I think. X2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 square and in the square root. All right. So I told you earlier, before going to take a start, you should have a rough copy or registers ready with you, or maths journals with you, so that you title it the revision workshop, and the title is coordinate geometry, coordinate geometry along with the graphing of linear inequalities, right? So under that, you have to find out the distance between 2 points. Can you do it quickly? I'm just going to give you 2 minutes only. We'll- Make it 3 minutes, no problem at all, but you have to do it. Whatever is the way to find out the distance, let me see who is able to find out the distance between these 2 points. The grids is visible to you. Those who are using Android, they can use thumb and index finger on the screen to zoom in, right? Have you started doing the distance? Are you people are doing? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. All right.
So those who have done with the distance, they have to write their answers in chat box quickly. Yes, how many have done? Just to let me know. Raina has done, and who else has done? Raina has done. Hafsa, Varisha, Iman, Wajiha, Fiza, Salid, Umemas, Senior Naeem. Who else has done this? Still doing? All right, let me reveal the answer and check your answers whether you have done correct or wrong, right? Okay. So the coordinates for A are 5 and 3 and B is 18, comma 17, right? First of all, you need to reveal the coordinates of the dotted points, and then you have to connect the line again to find out the distance between 2 points. All right. This is your horizontal axis and this is your vertical axis. You will you have option to use Pythagoras theorem as well, right? So you can use Pythagoras theorem to find out like AB square is equal to 13 square plus 14 square. That would be your under radical 13 square plus 14 square. Okay. And you'll find out. Can you just calculate quickly of AB is equals to 13 square plus 14 square? Use your calculator to find out the AB quickly. 169 Many and of you have, 196. yes. Sir, Actually, many 19.1. 19.1 is your answer. Actually, thing is that this is one of the way to do to find out the distance. You might have done with another way, that is x2 minus y2 minus y1 whole square of one formula, right? The formula which I'm going to show it to you right now is y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1. And you might have Sir, done with can we this use form. this formula? You can use this formula, which I already have shown to you. Both ways. See, you have both ways to solve, to find out the distance actually, right? So you have options to find out the distance. Either you will use that formula, the Pythagoras theorem, and or the distance formula directly, right? Which is given there. Okay. Any problem? Shall I continue? Yes. Shall I proceed to the next Yes, slide? sir. Okay. Yes, sir. Uh, yes. Actually, the objectives for the coordinate geometry is to, the equation of straight line. You need to understand that, and you already have done with the task. And since it's a sort of a revision and recap is going on, you will find out the area of triangle. You will find out the parallel lines, and the concept of the parallel lines in the coordinate geometry is gradient of the AB is equals to gradient of CD. If the lines are parallel, both the gradients are same, right? If the lines are parallel, so the gradient of the one gradient is another equals to the another gradient, right? Similarly, as perpendicular lines, if the line is being bisected perpendicular, so the concept is that the gradient of m1 times gradient of m2 is always equals to -1. This was the basic concept. You just take the picture of this slide quickly, so that would be helpful in upcoming slides as well. And while doing the past paper questions, when you do past paper questions at your home for practicing this coordinate geometry, this slide would definitely going to help you out. Done? Shall I proceed to the next?
Yes or no? Okay. Now, find the distance between the points. As I already have told you that you need to, use the formula, and you are through with the formula as it was explained to you. Name the coordinates x1, y1, and use the distance formula to find out the distance, which is quite easy for you to do it. Yes or no? Yes, sir. Okay. So now, one concept was of the midpoint of 2 points. So this concept was taught to you, if you remember in the class, that how do you take out the midpoint. There is one formula to find out the midpoint. Can you do this question quickly to find out the midpoint? And I'm going to give you 2 minutes more again, and do find out the midpoint. And yes, you have to self-assess yourself, self go for the self-evaluation, that whether you are able to find out the midpoint or not, since you already have done. And those who are just so missed out the revision classes, the on-site revision class of coordinate geometry, this is the vital opportunity for them to grab with the concept of the midpoints and all, right? So right now the task is given to you to find out the midpoint. Your time starts now. Sir, X is 11.5 and Y is 10. Okay. Anyone else other than Hafsa Hashmi? She has found the answer of midpoint. Sir, 10.5x and 11y. All right. Raina has found the answer. Anyone else? I want maximum of you just do the task, whatever I'm going to give you right now. Odessa is there, Wajiha, Sali, Umema, Senia, Varisha Siddiqui, Fizza Ali. Kindly cooperate. Please cooperate with me, and I want your responses, right? Please kindly do it. Okay. So let me reveal the answer, and just you have to check yourself. And those who are stick and those who have complexity to find out the midpoint, they have to understand the concept. Okay. So first of all, you have to write down the coordinates of the points which are already been plotted. And second thing, join the line, and then you have to look into the midpoint. How you're going to do it? The formula for midpoint is x1 plus x2 upon 2. All right, y1 plus y2 upon 2. That's your midpoint actually. Okay. See, I'm going to share with you the screen, and it is being shared, and now you can find out. See, it's 11.5, it's 10, and to find out the midpoint is 11.5 and 10. Whose answer is correct? Tell me honestly, please. Mine, Who? sir. Hafsa. Hafsa Hashmi answer is correct, and Raina, your answer is correct. No, sir, I mixed up 5 and 3. Okay, now you got the mistake. You got the correction. Yes, sir. Okay, and those who have not answered my question, so I want Udesa. Udesa, can you hear me? Yes, sir. Can you please can you try to level best to find out the midpoint? Sir, can you repeat? Uh, Udesa, I'm asking that have you done the midpoint before my this answer? Have you done the midpoint on your own? No, sir. I just joined the class. I was unable to understand.
Okay. So there is a formula to find out the midpoint is x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2, right? So find out the midpoint with the help of this formula I'm writing here. Can you see the screen I'm writing over the screen? Is it visible to you guys? Yes or no? Yes, sir. This is the formula to find out the midpoint. Yeah. Yes. Y1 plus y2 upon 2. Okay. So proceeding to the next slide, just take the picture of this slide so that it will be helpful do other questions related to the midpoints, right? And at same time, this would be helpful to you to write down the lecture notes of the revision workshop. Okay, now next is all right. So again, the midpoint is given to you. Now you can find out this midpoint quickly. I'm going to give you 1 minute only. Your time starts now. We have started at 26 minutes 44 seconds on the screen. The time is going on. I'll stop at 27:44. Waiting. All right. Come on, do it. People used to find in 30 seconds, but you will be given 1 minute once again. So 20 seconds left almost. All right. 10 seconds left. All right. 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. Stop now. You tell me the answer quickly. Tell me the answer quickly. I think no one has done in 1 minute, right? The 1 minute is exceeded. So you should have a strong skills while finding out the midpoint or whatever the question is, right? So what's your answer? Come on, guys. Tell me your answer quickly. Yes, what's your answer? Sir, the question is the same as the one before, so the answer is same. Are you sure? 11.5 and 10. Is it same? Yes, sir. Okay, Yes, then it's okay. But otherwise, if it is same, then even though you have done late, if it is same, then that would be done in 30 seconds, 20 seconds. Okay. No, sir, it But was anyway, done. We were just confused. We were seeing wrong. but you should no. It's okay. It's okay. Anyways, now very quickly, you tell me how do you find the equation of a straight line? So the question number one Y is is given equals to to you. mx plus. Y is equals Uh, to mx plus c. okay, all right. It's okay. Y is equals to mx plus c is the general form, which I'm agreeing on. But right now, your target is to find out the gradient and y-intercept only, right? The equation of straight line is 100% correct that y is equals to mx plus c. That is okay. Right now, according to this question, you need to find out what gradient and y-intercept. What is the gradient of question number 1?
And what is the y-intercept? At least you should say y-intercept directly by looking the graph. And I already have given you the concept of the y-intercept over the on-site classes, if you remember. 2. Sir, y-intercept 1. 1 and 3. According to you, for question number one, what is y-intercept? 1. It's Okay, 1. it's one. All right. And according to you, what would be the y-intercept in question number two? 3. 3. 3. That is fair. Okay, that is fair. Okay, 100% correct. But right now, you need to find out the gradient of question number one. What is the gradient of question number one? See, those who have missed out the point, the revision which was, given to you on site classes, the concept was given to you of the gradient and y-intercept, and let me reveal the concept of y-intercept. Y-intercept is the intercept, the line which crosses y-axis. See, you'll have to look into the line, the diagonal line which crosses the y-axis. Where is the point where the line you need to find out or target the line where the line is intersecting y-axis actually. The line which intersects y-axis at the point, at the desirable point, that point is considered as the y-intercept. Now look into the diagonal line, you will find the point which is exactly bisecting on y-axis at 1. That's the reason I'm just marking here. See, I have marked this point, and this is actually 1. The reason behind of 1 is this, right? And see, again, this question number 2, y-axis plane is there, and line is exactly bisecting on the line, on the point, that is 3. That's the reason you're saying 3. Now it's time to find out the gradient. And I already have, discussed this thing, that when the graph is given to you, and what is the shortcut way to find out the gradient. Did you remember that or not? सर हम लोग कोऑर्डिनेट्स लेंगे उसके बाद y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, आपने कोऑर्डिनेट्स ले लिया, जो भी किया है मुझे बताइए ग्रेडियंट क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का. Sir, 1. 1. अच्छा, 1 आ रहा है. अकॉर्डिंग टू यू इट्स 1 आ रहा है. चलें, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आ रहा है ग्रेडियंट 0.5. का? 0.5. इट्स 1/2 अकॉर्डिंग टू यू. Yes. अच्छा जी, अब देखें जरा. देखें, 2 पॉइंट्स वर गिवन टू यू. एक मिनट, यहाँ पे हम आ गए. देखें, 2 पॉइंट्स गिवन टू यू. वन, आई टोल्ड यू that you have to select any one of the point. Since I cannot see this line is exactly passing through the corner of the box. Yes, since it's not passing through the corner of the box, you have to take help by taking only 2 suitable points. If I'm marking this point, okay, you tell me what are the coordinates of this point which I have marked. Come on, quickly. 0 and 1. I have marked here. See, let me change the color. 3 and 4. Just wait. 3 4. I'm talking about this point. This point. Actually, this is 3 and this is 4. Yes or no? And Yes, sir. what are the points where I have marked here? 0, 1. 0, 1. Now, as I told you that, all right, if you are going to extend this imaginary line towards to this point and try to target your rise, what would be your rise?
Your rise is nothing but 3. Yes or no? Your rise is 3 or not? Your vertical axis. You just Yes, look sir. into where Yes. see this. Yes, this point is 4 and your minimum point is 1 here. So 4 minus 1 is what? 3. And your maximum point Yes. again, you need to find out the horizontal distance. Again, I told you have to approach rise over run. Got it? You have to approach this. So according to rise, your maximum point of y-axis was 4 and your minimum point was 1, that is 3. And again for run, maximum point is 3 and minimum point is 0 is 3. So 3 over 3 is 1. So your gradient is 1 and your y-intercept is also 1. How many have done 100% correct? This question number 1. Me, sir. Mm. Okay, that's good. Me, sir. All right. And those who have found the correction, they have to do the correction. And I hope that you have understand the concept. Okay, for question number 2, again, rise upon run, you have to approach rise upon run. And with a similar way, if you are going to select this point, let's say, if I'm selecting this one point, okay, and this one point, it's up to me whatever the points, what are the 2 points which you need to select. It's up to you. If you would like to select any 2 points from one point here, let's say if you are taking this point, okay, and you're taking another point, let's say here, and you have to approach again the rise upon run. Okay, you have to approach rise upon run. So find out the coordinates the way we have done. Find out the coordinates the way we have done in question number 1. With a similar case study, you have to proceed to find out the gradient. Okay, to cut short this particular slide, I'm moving to the next slide because it's repetition of question number 2. Since now, if for example, if you were given 2 points on a graph, you can calculate the equation of straight line that passes through those points. Now how do you do it this? You have to connect the both coordinates and extend the diagonal line. And yes, the target is your y is equal to mx plus c. You need to calculate the equation of straight line. So m is the gradient, as I told you, the change in y and change in x, which is rise upon run, and c is a y-intercept, which was given to you. The concept was already given to you. And this is run, this is rise, and it was discussed in the previous slide. And you know, once you need to form an equation for the equation, what are the 2 things you required? You tell me, what are the 2 things that you require to form an equation? Come on. Gradient What are and the 2 things? Gradient y-intercept. and y-intercept. Excellent. Gradient and y-intercept. Okay, so the gradient is already been found. Now can you tell me how do you find y-intercept? By putting the, yes, by putting the value of c, by plugging the values of x-axis and y-axis, and write down the answer by writing it y is equal to mx plus c. Your gradient is 4 and your y-intercept is -2, and this is how you log with the equation of line. Clear? Shall I proceed to the next? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now you can check by substituting another coordinates and you'll find out same, right? Just for the cross check whether you have done 100% right or wrong, you have to substitute the one of the coordinates into the equation to find out that you have done 100% correct or not. Okay. Now calculating the equation of straight line once again. Okay. How do you form an equation of line? Can you do it? I'm just giving you 3 minutes to find out, form an equation of line quickly. Now this time you have to be fast. Okay. So
So your time starts now. Sir, we found it. Yes, what's your answer? Sir, the gradient is 0.25 and the y-intercept is 0. So y is equals to 0.25x or y is equals to 1 upon 4x. Okay. So we have found the gradient and the y-intercept, and what is the final equation? Y is equals to 0.25x, or we could say y is equals to 1 upon 4x. All right. Let me reveal the answer now. Is this your gradient and y-intercept coming? Yes, sir. Yes, Umema. Is this your gradient and y-intercept Yes, sir. coming? No, No, sir. Umema, what's your mistake? Did you find your mistake? And your Yes, sir, I final did. equation is all right. Yeah, I found Your it. final equation is y is equals to 4x minus 6. See, you people are this, you need to learn from your mistakes. It's okay, it's a practice going on. Since you have to go through by these things, because these are the very important things which will be helpful source while doing the inequalities. And this is the backbone of the graphing of inequalities and the reflection, rotation, and translation. All right. Okay, shall I proceed to the next? Yes, sir. All right. Am I audible to you, class? Yes. Yes, sir. All right. See, this is the practice one slide for you, and you just take the picture and do practice at your home. Okay. Take the picture quickly, and you have to form an equation while doing your practice. Take the picture quickly because I'll be proceeding to the next slide. We already have discussed the points. Okay. How do you form an equation? Got it? Shall I proceed to the next now? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now, if the coordinates been given to you and you are asked to find out, form an equation, again you have to target to find out the gradient with the help of the formula. This time you won't be required a rise over run. Yeah, okay. Since you cannot see the graph, but right now the coordinates been given to you, and you need to find out the gradient and y-intercept. Yes. Can you calculate before me quickly? Do it. Do the working quickly and hurry up, please.
5. Sir, 5. Yes, what's your answer of gradient? Quickly tell me the answer of your gradient. 5. 5. Okay, let me reveal the answer. It's absolutely 5. And what is the answer of your y-intercept? Hurry up now, please, because we are near to the eh, graphing of inequalities, right? So y-intercept, whatever the y-intercept you are getting, you have to find out the y-intercept and then put your gradient and y-intercept into y is equal to mx plus Sir, c. Yes. -1. Okay. Anyone else? -1. Okay. So now after gradient and y-intercept, what is the next step to form an equation? Can anyone just tell me? Sir, we have to write the numbers in the equation y is equals to mx plus c. Excellent. You have to plug in the points m and c to form an equation. Simply is that. Okay. But be careful while writing a negative number, right? Okay. So this is the practice one question for you. You can take the picture quickly and you have to do practice at your home. Okay. I hope that you have taken the picture and take the screenshots. Those who are just on using Androids. Anyways, proceeding to the next. All right. This is the similar question which was given as a, you know what to say, for the practice, and was short test was meant, since we already have done the ample practice of forming an equation. Now, all right, class. So thing is that we have done with the introduction and the revision and recap is done. Now the inequalities we are going to start and will inshallah end with the inequality graphing of inequalities. So I'm going to show you the screen. Just hold on. Just wait. Just can you see the screen? Is it visible to you? I just hold on. Yes, sir. Just hold on. D is all right. Now let me execute it. All right. The graphing of linear inequalities, right? This is the title slide. Okay. Can you see the title slide? Yes, sir. Yes, sir. Yes. All right. Now proceeding to the next. Now I'm just giving you 3 minutes, not more than that, to solve A, B, and C quickly. Do it.
Yes, class, have you done the answers of ABC? Yes, what is the answer of A part? X is greater than 7. 7. Alright, X is greater okay, than 7. all right. X is greater than 7 according to you. All right, what is the answer of B part? X is greater than 3. X is greater than 3. All right, and what is the answer of C part? Sir, I'm not X sure, is but smaller X is greater than -2. X is greater than -2. I'm not sure about this. Okay, let me tell you the concepts of inequalities. Okay, and yes, just hold on. Actually, the thing is that to understand the inequalities, we have greater than, less than, or equals to, greater than, or equals to. All right, got it. So right now, if you have done with the task of A part 3x plus 5 is greater than 26. For cross check, you have to plug in this 7. You have to plug in this 7 into x. You tell me the result. What happens if you're going to plug in this x? Yes, if you're going to substitute the value of x7, so this will become what? 21. If this will 21 become plus 5. 21, so 21 plus 5 is what? 26. 26. And 26 is, again, if you're going to compare with 26 with 26, what happens then? Equal. 26 minus 5. Okay, and it's going to be 3x. Again, you'll write here 21 x is greater than 21 over 3. All right. This is the similar thing that just imagine this is inequality sign. If this could have equals to sign, is a similar thing the way you used to solve the equations, right? It's not a difficult task for you to find out. Anyways, this is the answer that you have found with this. But remember one thing, there are the flip conditions. Did you remember the flip conditions of inequalities? Very quickly. Sir, when we multiply What are the by the negative, then we change the side of the sign. yes, the flip conditions are you have if you multiply or divide, if you multiply or divide a minus with the variable, be it x or y or any other variable, okay, so your sign of inequality will be flipped. Got it? Let's say, for example, if you look into this the C part, minus x is greater than 16 minus 8. Yes or no? Yes. And minus x is greater than 16 minus 8 is 8. Since whosoever has found the answer minus 2 is actually the wrong answer. This is wrong. So make a correction. Actually, this is not multiplication. This is 8 minus x. If this could have 8x greater than 16, if this could have 8x
okay, greater than 16, then you can say x is greater than 2. Okay, since it's multiplication going Okay, on, sir. that would be divided to the next side. Okay, but you have overlooked the sign of minus here in between 8 and x. That's the reason your answer is coming wrong. So go for the correction and look into the question appropriately and try to comprehend and understand, and be careful while doing these type of questions. These are the silly mistakes which are very much expected at the student end. They used to do like the same similar mistakes in paper one and in CIs as well. Okay, so then minus सर x is greater than सर now. सर हम लोग Now माइनस के साइन को see the condition. हटाएंगे नहीं. हटाएंगे ना अभी. Yes, minus x is greater than 8. I told you revise this concept. The flip condition is this. मैंने कहा कि कोई भी माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा हो वेरिएबल से या डिवाइड हो रहा हो तो आपकी साइन ऑफ इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाती है. ठीक है, अब आप देखिए x इज ग्रेटर देन माइनस, सॉरी ग्रेटर देन नहीं बल्कि लेस देन होगा, क्योंकि फ्लिप हो गई ना कंडीशन. मैंने कहा ना आपको दिस वुड बी फ्लिप्ड. नाउ दिस वुड ग्रेटर देन है तो ये लेस देन हो जाएगा, राइट. x is less than -8. This is your final answer. Okay, got it or not? Easy, but you need to remember the flip Yes, sir. conditions. सर मेरा अच्छा, आंसर यही दूसरी आया, सूरत में मतलब आपको कुछ और किया। बताऊं. हाँ, फ्लिप कंडीशन आपने मिस कर दी होगी, कोई इशू नहीं है. देखें, एक और कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ. अगर दिस कुड हैव, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर इस तरीके का कोई होता मसला, -x इज ग्रेटर देन -8, तो आप कौन बताएगा आंसर? इसका आंसर बताएं जल्दी से. सर आप दूसरा पेन यूज कर लेंगे. सॉरी. नहीं, कोई बात नहीं. I can use -x. Is it visible? Minus, is it visible to you? यस सर. Now you tell me what is X is lesser than 8. excellent, because minus is being multiplied with the variable, both are being cancelled. So your final answer is x is less than 8. Yes or no? Yes, sir. Okay. Now since you have done this one, ये आपने ऐसे ही किया होगा 5x minus 3x. Okay, and which is less than 10 minus 4. Now I can use 5x minus 3x is 2x, जो कि less than 6 है. तो x is less than 3 हो गया. ओके, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे x is less than 3 आ रहा है, लेकिन मुझे किसी ने, आप में से किसी ने आंसर बताया था, वो तो थोड़ा सा अलग था. ये देखिए, ये किसी ने मुझे आंसर बताया था आपकी, which is actually wrong. देखें, यहाँ पे साइन रॉन्ग है. एक्चुअली इनइक्वालिटी की जो सिंबल है वो दैट हैज टू बी लेस देन. ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है. गॉट इट. सो योर राइट आंसर इज दिस. योर राइट आंसर इज दिस, और इसका आंसर इज एक्सिस. ये ठीक है, ये सही आ रहा है आपका. गॉट इट. शैल आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट? ये तो एक स्टार्टर था कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दी हल्का फुल्का. नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर द inequality graphs. अब just like an equation of an inequality can be plotted as a graph. सबसे पहले तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि यू हैव अ बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट. अब जहां जो बात समझ नहीं है वहां रोक दीजिएगा, एंड आई विल कंटिन्यू विथ inequalities. गॉट इट. नाउ गौर से देखें इसको कि the difference will be that there is a range of possible values. You will be looking at the shading regions that satisfy a particular conditions. देखें, इसमें आपके पास दो जब भी कोई सवाल आता है इनइक्वालिटी का,
मैं आपको भी देखें, ऑब्जेक्टिव्स तो यही हैं हमारे कि after doing the inequalities, you'll be able to find out the regions which satisfy the inequalities using horizontal and vertical lines, or you should know the basic concept of y is equals to x and y is equals to minus x. And yes, you'll be able to plot the graphs, inequalities, identify the correct region that is satisfying the inequalities. These are the learning objects. And yes, on a set of x's, show the set of values that satisfy the inequality. ओके, अब देखें यहाँ पे दो चीजें यूज होती हैं। बाज औकात यहाँ पे कीवर्ड यूज हुआ है सेटिस्फाई, ठीक है। बाज औकात आपको सीआई के पेपर्स में लीव शेडेड रीजन, अच्छा शेडेड, और बाज औकात ये लिखा हुआ होता है लीव अनशेडेड, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, या तो ये सवाल आता है या तो ये लिखा होता है अनशेडेड, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ शेडेड। शेडेड का मतलब ये है कि आपने वो रीजन को आइडेंटिफाई करना है, शेड करना है जो सेटिस्फाई कर रहा हो इनइक्वालिटीज को, ठीक है। और अनशेडेड का मतलब है कि वो एरिया आपको लीव करना है, जो एरिया आपने शेड नहीं करना, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को, जिसको रिक्वायर्ड रीजन भी कहते हैं। वो हम आने वाले क्वेश्चंस में आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि व्हाट डज शेडेड और अनशेडेड मींस। इसके एक दो क्वेश्चंस अब आपको मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। राइट नाउ फोकस ऑन दिस। स्टेप नंबर 1, यस, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। देखें, एक चीज याद रखिएगा कि अगर लेस देन एंड ग्रेटर देन का यूज आ रहा हो तो हम यूज करते हैं डॉटेड लाइन। क्या यूज करते हैं बेटा? डॉटेड लाइन। बस ये ध्यान में रखिएगा, डॉटेड यूज करते हैं। और अगर यही चीज लेस देन और इक्वल्स टू हो या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो तो हम सॉलिड लाइन यूज करते हैं। क्या करते हैं यूज? सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिएगा डॉटेड के अंदर तो, अच्छा सॉलिड लाइन के अंदर वो तमाम तर पॉइंट्स जो लाइन के ऊपर मौजूद होते हैं दैट आर काउंटेबल कोऑर्डिनेट्स। और जो डॉटेड लाइन के ऊपर जो जो एग्जैक्टली जो लाइन है डॉटेड, उसके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं, उसके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो काउंट नहीं होते। वो मैं चीज क्या कहना चाह रहा हूँ आगे आपको बताऊंगा। राइट नाउ यू जस्ट फोकस ऑन एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 2। अगर देखें एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू, इसका मतलब यहाँ पे सिंबल लेस देन और इक्वल्स टू, ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे कौन सी लाइन ड्रॉ होगी? सबसे पहले बताएं, डॉटेड होगी या सॉलिड? सॉलिड। डॉटेड। सॉरी, बेटा सॉलिड। आपने, हाँ ठीक है, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, सॉलिड यूज होगी। अच्छा, सॉलिड इस वजह से यूज होगी कि इक्वल्स टू साइन मौजूद है, राइट। एंड देन सबसे पहला काम ये करना है कि आपको इक्वेट करना, अज्यूम करना है कि इनइक्वालिटी नहीं है। थोड़ी देर के लिए आपने इसको x इज इक्वल टू 2 करप बना देना है, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि ये इनइक्वालिटी साइन गिवन ही नहीं है। आप x इज इक्वल टू 2 उसको अज्यूम करें, और विद द हेल्प ऑफ द स्किल्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यू हैव टू प्लॉट x इज इक्वल टू 2। मुझे बताइए x इज इक्वल टू 2 कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इज इक्वल टू 2 है। ये है आपका x इज इक्वल टू 2, ऐसे ही है। तो अब आपने क्या करना, लाइन शोइंग x इज इक्वल टू 2 वो यही है, यस और नो? यस। ठीक है। अब आप देखें, आपके पास गिवन है लेस देन और इक्वल्स टू का सिंबल। अब लेस देन और इक्वल्स टू का सिंबल का मतलब यह है कि आपने इनइक्वलिटी को बताना है, स्पेसिफाई करना है, शेड करना है कि आपको वैल्यूज सेटिस्फाई होके मिले, यानी जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो उसमें हम रीजन, उस रीजन के अंदर जितने भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे हम इनइक्वलिटी में अगर पुट करेंगे वो तमाम तर कोऑर्डिनेट्स जो है वो प्रूफ कर रहे होंगे कि आपने जो शेडिंग की है 100% करेक्ट की है। वो कौन सी शेडिंग होगी? अब आप देखिएगा, मैंने शेडिंग यहाँ पे की है
इसको समझने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है? वो कॉन्सेप्ट गौर से समझिएगा। वो कॉन्सेप्ट है, अगर वो लिखा हुआ है, अगर वो सेटिस्फाई लिख रहा है या फिर वो शेडेड रीजन लिख रहा है, ठीक है? ऑन द सेट ऑफ एक्सेस शो द सेट ऑफ वैल्यूज दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज, या तो ये लिख रहा है, ठीक है, या तो ये लिख रहा है कि दैट द सेट ऑफ वैल्यूज लीव द सेट ऑफ वैल्यूज शेडेड इन द इनइक्वालिटी, ये भी लिख सकता है, ठीक है? अच्छा, जब ये शेडेड लिखे या फिर सेटिस्फाई की बात करे, तो आपने नॉर्मल शेडिंग करनी होती है। नॉर्मल शेडिंग में यही होता है कि देखें जिस तरफ ये एरो जा रहा है, मतलब ये साइन अगर लेस देन इक्वल्स टू है, तो आप मुझे बताएं इसका एरो अगर बनाऊं तो मैं एरो ऐसे बनेगा ना, ये देखें एरो ऐसे बनेगा ना, गोया कि आपने शेड क्या करना है, ये रीजन शेड करना है। गोया कि ये बता रहा है कि शेड कहाँ करना है, इस तरफ करना है, यानी आपके राइट हैंड साइड पे करना है। अच्छा, इसके ये तो एक बिल्कुल आम सी मिसाल मैंने दी है। इसके अलावा भी आप मुझे बताइए वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप यहाँ पे प्लग इन करेंगे टू के होते हुए। देखें, अगर आप मुझे बताइए, अगर आप में से कोई ये रीजन लेता है शेडिंग के लिए, जो अभी मैंने यहाँ पे देखें ये वाला अगर रीजन लेता, इसमें से ये पॉइंट लेता, पॉइंट नंबर, तो यहाँ पे 4 अगर मैं लिख दूं, तो क्या ये आपके पास आंसर इसका ट्रू आता है या फॉल्स आता है, ये बताइए। फॉल्स। फॉल्स आता, जबकि वो कह रहा है कि आपने वो रीजन सिलेक्ट करना है जो कि सेटिस्फाई करे इनइक्वालिटी को। अच्छा, मैं अगर इस पूरे रीजन में से कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूँ, लेट से मैं ये वाली वैल्यू ले लेता हूँ, लेट से 8 ले लेता हूँ, अब भी आपके पास फॉल्स आएगा। मैं अगर 2.5 ले लेता हूँ तब भी फॉल्स आएगा। मतलब मुझे वो रीजन जरूर लेना है, मुझे वो रीजन जरूर लेना होगा जो कि सेटिस्फाई करे इनइक्वलिटीज को। तो वो रीजन है कौन सा? यस, आई नीड टू टारगेट द रीजन। वो रीजन आपके पास रीजन है राइट हैंड साइड वाला। एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि नॉर्मल शेडिंग के अंदर सिंपली ये है कि एरो टेक्निक, यू नीड टू फॉलो द एरो टेक्निक। मैंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही सिखाया है कि या तो आप टेस्टिंग पॉइंट ले लें या तो आप एरो टेक्निक को फॉलो करें। एरो टेक्निक का मतलब यह है कि जिस जगह, जिस जिस डायरेक्शन में आपके पास वो इनइक्वालिटी का सिंबल आ रहा है, उस जगह पे शेडिंग कर दो, जैसे कि ये है। अब आप मुझे बताओ, एरो तो मैं ऐसे नहीं बनाता, कोई भी एरो ऐसे बनाता है खौफनाक सा? बनाएंगे तो आप No, हमेशा sir. ऐसे बनाएंगे ना, एरो बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे ना। तो गोया कि ये इससे पता लग रहा है कि आपने शेडिंग करनी है राइट साइड पे। आप मुझे बताइए, अगर दिस कुड हैव, लेट्स से, अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ, एक सवाल आपसे है कि अगर यही चीज ये गिवन होती इस तरीके से कि आपके पास होता एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, अब आप मुझे बताइए कि शेड कहाँ होता, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? ये आपका राइट साइड राइट। है, ये आपका लेफ्ट साइड है, Left, ठीक है जी। left side. लेफ्ट। आ, अब शेडिंग कहाँ होगी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 पे? कहाँ होगी? लेफ्ट। लेफ्ट साइड पे। कैसे पता Left. लगा? व्हाट इज द एरो वे टू लेफ्ट का फाइंड है। आउट? Sir, science है. साइन से पता लगा, एक्सेलेंट। एक तो साइन से पता लगा कि भाई ठीक है, ये एरो जो है ना यहीं बनेगा, गोया के ये बता रहा है कि हमने शेड यही करना है रीजन, ठीक है। नंबर 1 ये है टेक्निक। दूसरी टेक्निक तो ये है कि आप पॉइंट ऑफ टेस्टिंग ले लें। पॉइंट ऑफ टेस्टिंग उसे कहते हैं, कोई भी एक कोऑर्डिनेट्स ले लें उस रीजन से। लेट से आपने कहा कि ये तमाम तर वो पॉइंट्स हैं अकॉर्डिंग टू यू जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो आप कोई भी रैंडम पॉइंट ले लें। मैं रैंडम पॉइंट ले रहा हूं, लेट से 8। ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्क किया है 8। तो मुझे बताओ कि 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को? ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? ट्रू। True. ट्रू। अच्छा, एक और पॉइंट कोई भी बताए, आप में से कोई भी टेस्टिंग करना चाहे, कोई भी एक पॉइंट उठाएं जो कि सेटिस्फाई कर रहा हो, जो कि बता रहा हो कि आपने शेडिंग 100% करेक्ट की है या सही की है।
भाई एक्स एक्सिस का कोई सर भी एक अगर हम पॉइंट लोग बता दो ना। नेगेटिव नंबर्स लें सो नेगेटिव नंबर। हाँ तो वो क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, आपका फॉल्स आना चाहिए ना। प्रूफ करके देख लें, नेगेटिव नंबर यस लें। सर। अब लेट से आपने नेगेटिव नंबर ले लिया -2। अब मुझे बताओ -2 इज ग्रेटर देन 2, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि आपने वो वैल्यूज शेडेड की हैं, वो रीजन शेड किया है जिससे प्रूव हो रहा है। एक तो टेस्टिंग, पॉइंट ऑफ टेस्टिंग के जरिए पता लग रहा है कि आपने 100% सही शेडेड रीजन किया है, और एक एरो टेक्निक से पता लग रहा है। राइट? किस किस को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, जल्दी बताएं। किस किस को ये कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर हो गया सर। है? सबको क्लियर हो गया है? अभी तो मैंने स्टार्ट लिया है, मैं इसके आगे बढ़ रहा हूँ ग्रेजुअली। और क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो माशाल्लाह से आपको आ चुकी है, राइट? यू नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखें इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कहाँ यूज हो रहा है, कौन बताएगा? वेयर सर इज द जो यूज हम ऑफ कोऑर्डिनेट लाइन बना, ज्योमेट्री? द इक्वेशन ऑफ द लाइन x इज इक्वल्स टू एक्सीलेंट, 2। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बेटा, बहुत जबरदस्त। आगे चलते हैं। अच्छा ये तो देखें, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल टू, इज दिस करेक्ट शेडिंग और नॉट? यस और नो? यस सर। Okay, यस सर। can anyone tell me point of testing? How do we go for the point of testing? सर हम लोग कोई भी रैंडम नंबर लेंगे और उसको टेस्ट करेंगे फॉर्मूले में पुट अप करके। मुझे ये बताइए, रैंडम नंबर जो लेंगे वो शेडेड रीजन से लेंगे या अनशेडेड रीजन से लेंगे? नहीं सर अनशेडेड रीजन। अनशेडेड रीजन से लेंगे। आप कह रहे हैं अनशेडेड रीजन से लेंगे, तो कौन सा नंबर लेंगे? अगर अनशेडेड से लेंगे तो क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। जी। तो अब एक्चुअली आपने शेडेड रीजन की टेस्टिंग करनी है। शेडेड रीजन आपने बना दिया है, तो उसमें से कोई भी एक एक्स का नंबर ले लीजिए। आप प्रूफ करके देखें कि वाकई की वो इनइक्वालिटी आपको मतलब सेटिस्फाई, उस पर्टिकुलर रीजन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। अब आप देखिए गौर से क्वेश्चन को, ऑन अ सेट ऑफ एक्सिस शो द सेट ऑफ वैल्यूज दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2। अब जितनी भी आपने यहाँ पे ली हैं 2 से लेके बशमूल, जो मैं आपको बता रहा था ना कि अगर सॉलिड लाइन है तो उसमें ये पॉइंट भी लिया जा सकता है। अभी मैं देखिए इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने, गौर से देखिएगा। मैंने हाईलाइट किया, क्या ये पॉइंट हाईलाइट हुआ हुआ नजर आ रहा है? यस सर। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाता है? 2 पॉइंट, एग्जैक्टली ऑन लाइन है, सॉलिड लाइन है। अगर यहाँ पे डॉटेड लाइन होती ना, मैं कभी भी पॉइंट ऑफ टेस्टिंग का ये पॉइंट नहीं लेता। वजह ये है कि डॉटेड लाइन की रेंज जो है ना वो स्टार्ट होती है बाद की वैल्यू से, और ये सॉलिड लाइन इस वजह से ली जा रही है कि उसमें इक्वल्स टू आ रहा है। अब आप खुद बताइए, अगर मैं 2 लेता हूँ और प्लग इन करता हूँ इसमें पॉइंट ऑफ टेस्टिंग के तौर पे, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, आप मुझे खुद बताइए इज इट ट्रू और फॉल्स? जी, ट्रू है फॉल्स है? It's true. It's true because I know that 2 is not less than 2, but 2 is equals to 2. वजह यह है कि आप इसको कैसे रीड करते हैं, आप इसको रीड करते हैं ऐसे, इसको आप लिखते हैं लेस देन, आप इसको लिखते हैं लेस देन, ठीक है, और नीचे लिखते हैं और। याद रखिएगा, और का मतलब या होता है, राइट? और लेस देन, और या तो वो लेस देन हो या फिर इक्वल्स टू हो। तो मुझे बताइए 2 लेस देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल्स टू तो है। यस और नो? तो कंडीशन, अगर वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, द एंटायर कंडीशन इज ट्रू। गॉट इट? अब आप देखें, आई एम जस्ट प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। और आपको देखें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि सॉलिड लाइन इफ लेस देन ग्रेटर देन, यू हैव टू पुट इन द सॉलिड लाइन, राइट? वो जो कि हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। इफ यू वुड लाइक टू टेक द स्क्रीनशॉट or picture of this slide, you can take it quickly because I'm going to proceed to the next slide.
Shall I proceed to the next slide? बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे आ Yes, रहे sir. Yes, हैं sir. हम? ठीक है। अच्छा साथ ताकि अगर ताकि आपको जो है ना मिलती रहे। ओके, on a set of axes show the set of values that satisfy the inequality. अब मैं आपसे सवाल करूंगा, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या है? व्हाट वुड बी द स्टेप नंबर 1 जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया था? व्हाट वुड बी द स्टेप Sir, नंबर 1? line draw करना है. रॉन्ग। लाइन करने से पहले आप क्या करने के लिए? Y equal to वन है। देखो मैं स्टेप्स में बता रहा हूँ, आप आगे बढ़ूंगा मैं, और ये स्टेप्स आपको यहाँ जहन में रखने होंगे। तो इसके लिए आप सोचो कि स्टेप नंबर 1 आपके पास ये है, और टारगेट आपने फिर बताया है कि इसको इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। नाउ यू टेल मी, कहाँ लाइन ड्रॉ करूंगा मैं जल्दी से? sir अब आज जल्दी बताइए। -4 और -6 के बीच में on the y axis. ठीक है, सही है। सॉलिड या डॉटेड? Dotted. ठीक है, ड्रॉ हो गई। क्या मैंने ये सही ड्रॉ की है? यस और नो? Yes. Now next is, but the inequality is saying a range of values. अब आप मुझे बताइए कि अगेन सेटिस्फाई का कीवर्ड आया है, मींस आपने नॉर्मल शेडिंग करनी है। नॉर्मल शेडिंग से मुराद ये है कि अब आप देखें लेस देन है। लेस देन से मुराद ये है कि आपके पास लेफ्ट और राइट का अब ऑप्शन नहीं है। अब देखें, इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर मैंने आपको एक बताई थी चीज कि अगर आपके पास ये सिंबल यूज हो रहा है तो समझ लो कि आपने शेड ये वाला एरिया करना जो कि राइट साइड है। अच्छा, अगर ये इस तरीके से बना हुआ है तो पता लगा है कि भाई ये वाला एरिया शेड करना है। लेकिन उसके बाद एक और टेक्निक बताई थी पॉइंट ऑफ टेस्टिंग की। अब आप खुद बताइए कि ये जो हमारे पास लाइन है वो दैट इज अ हॉरिजॉन्टल। अब या तो शेड अप होगा या शेड डाउन होगा। यू हैव टू ऑप्शंस। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, लेस का मतलब लेस का मतलब एक होता है ना छोटा, ठीक है? लेस मींस गेटिंग डाउन, डाउन एंड डाउन। गोया के आपसे कहा जा रहा है लेस मींस इस लाइन से लेस। इस लाइन से लेस का मतलब ये है कि इस लाइन से लेस का मतलब ये है कि यू हैव टू गो डाउन। लेस का मतलब ही ये होता है ना, गो डाउन। यस और नो? लेस का मतलब भी छोटा होता है ना। तो अगर आपके पास Yes, sir. हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन गिवन है और लेस का जो इनइक्वालिटी सिंबल यूज हो रहा है, तो यू हैव टू अप्रोच लेस मींस डाउन। आपके पास ऑप्शन ही यही है कि भाई या तो लेस का मतलब यानी या तो डाउन जाना है शेडिंग के लिए या तो अप जाना है। अच्छा, एक टेक्निक तो यह है कि लेस का मतलब डाउन व्हेन यू हैव अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ग्रेटर देन अगर होता और पता लगता कि ये आपके पास ऐसी लाइन है तो आपने कहाँ शेड करना होगा? ग्रेटर मींस अप। ग्रेटर का मतलब बड़ा, ठीक है? उस नंबर से बड़ा, यानी गोया के बताया जा रहा है ग्रेटर का मतलब अप, ठीक है? लेकिन अगर ये टेक्निक काम नहीं कर रही है या किसी को मुश्किल लग रही हो तो दूसरी टेक्निक मैंने आपको बताया पॉइंट ऑफ टेस्टिंग। पॉइंट ऑफ टेस्टिंग वो है पॉइंट, यानी फॉर एग्जांपल आप लेट से आप से शेडिंग होगा ये एरिया, ये हो गया शेडेड राइट। अब मुझे बताइए पॉइंट ऑफ टेस्टिंग जो मैं लूंगा, इस जो शेडेड एरिया में से कोई सा भी वाई का पॉइंट लूंगा। अब मुझे बताइए वाई का पॉइंट कोई सा भी बताएं, आप में से कौन बताएगा? जल्दी बताइए पॉइंट ऑफ टेस्टिंग। -10. -10। आइए जरा -10 पुट करते हैं यहाँ पे। -10, यहाँ मैंने लिख दिया -10 इज लेस देन -5, विच इज ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू। True. अब आप खुद बताइए। अच्छा, मैंने आपसे ये बात कही थी कि मैं ये वाला पॉइंट
इस वक्त नहीं लूंगा। मैं ये वाला पॉइंट जो और जो डॉटेड लाइन के ऊपर मौजूद है, मैं ये पॉइंट ऑफ टेस्टिंग के लिए नहीं ले सकता। कौन बताएगा क्या वजह है? What would be the reason that I won't be able to take this point? What is the reason behind? As I already have discussed in the previous slide. सर आपने बोला था सिर्फ सॉलिड लाइन पे ले सकते हैं। एक्सेलेंट। मैंने आपसे ये टेक्निक बताई थी कि जब सॉलिड लाइन होगी तो ही ये पॉइंट मैं ले सकता हूँ, वरना डॉटेड लाइन में ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं ले सकता। उसका रीजन ये है कि इसमें है लेस देन। लेस देन का मतलब -5 से छोटी। देखिए इक्वल्स टू का यहाँ पे सिंबल नहीं है। इक्वल्स टू का मतलब 4 इज इंक्लूडेड। इफ दिस कुड हैव y इज लेस देन और इक्वल्स टू -5, दैट मीन्स अब मैं स्टार्ट अगर लेता ना तो 5 is included. Since 5 is not included, -5 is not included because there is no equals to sign. Anyways, आपको ये बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से शेडिंग होगी और कैसे होगी शेडिंग, और पॉइंट ऑफ टेस्टिंग कैसे आप चेक किया करेंगे? सबको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? यस यस क्लास? सर। अच्छा मुझे बताइए, सीनिया नहीम, कैन यू हेयर मी? सीनिया, उमेमा, वलीशा, रायना, हफ्सा, आशमी, उदैसा, फिजा, सबको ये पॉइंट Yes, समझ sir. में आ रहे हैं जब मैं बता रहा हूँ? हफ्सा, आशमी, आप क्या Yes, कहेंगे? sir. समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। ऑलराइट, उदैसा, वरीशा, फिजा अली, Yes, sir. ठीक है, ओके, Yes, sir. समझ आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट, ओके। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये तो हो गया शेडेड रीजन, ठीक है, और वो डॉटेड लाइन यूज हो गई। जैसे कि मैंने आपको कहा डॉटेड लाइन इफ लेस देन। अच्छा आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट या पिक्चर ले लीजिए ताकि इसके नोट्स बनाने में आसानी होगी, और मैथ्स जर्नल पे काम करने के लिए बहुत यानी आपके लिए आसानी में वो करेंगे, ईज महसूस करेंगे, क्योंकि फेयर करना होगा काम। आई हैव टू चेक दैट वर्क ना, वेदर यू हैव डन और नॉट, इनइक्वालिटीज का रिवीजन वर्क, ठीक है। अच्छा, नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट, y is greater than x। अब कौन बताएगा? सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1। अब तो आपको याद होना चाहिए स्टेप्स। व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? कम ऑन, देखते हैं पहले कौन बताता है मुझे। y इज इक्वल्स टू x। बिल्कुल जबरदस्त कहा आपने, y इज इक्वल टू x। और ये बताइए y इज इक्वल टू x का कॉन्सेप्ट क्या है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है ये पॉइंट कि एग्जैक्टली डायगोनल होती है? यस और नो? 1 1 2 2 3 3 यस 4 सर। 4, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Got it. ठीक है। नाउ आई कैन ड्रॉ दिस डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन क्यों बनाई है मैंने, कौन बताएगा? सर लेस देन और ग्रेटर देन है। लेकिन यहाँ पे Less than equal ग्रेटर to देन है, नहीं है. सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस ग्रेटर देन। देन इक्वल्स। भाई ये ग्रेटर देन का सिंबल नजर आ रहा है, इसको आप लेस देन ना कहें, ये ग्रेटर देन है, ठीक है। और लेस जो है एल से होता है, एल को थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो वो लेस का सिंबल बन जाता है बेचारा। एल को थोड़ा सा मोल्ड करेंगे आप तो वो एल जैसे कि लेस देन हो गया, एल फॉर लेस होता है, तो ये एल नहीं है, ये ग्रेटर है, ठीक है। अच्छा, वाई इज ग्रेटर देन। अब अगेन मुझे बताइए शेडेड एरिया कौन सा होगा? अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेल मी द शेडेड एरिया। सर Above. ग्रेटर देन अप होता है तो अप की तरफ शेड होगा। जस्ट होल्ड ऑन।
Just wait. All right. So y is equals to x. So I need to write down. I need to just shade the area, and as it is says as greater than. Greater than का मतलब shade up. Okay. Shade up. अब आपने greater than हो गया. अब आप बताइए point of testing. कोई भी point of testing इस region में से बताएं. कौन सा लेना चाहेंगे आप? Point of testing बताइए. Yes class. Point of testing क्या होगा? -4 and -4. 4. बेटा बात सुने. पॉइंट ऑफ टेस्टिंग के लिए आप इसका मतलब y का पॉइंट लेंगे ना. y इज ग्रेटर देन x है ना. तो अगर आप -4 ले रहे हैं तो -4 इज योर x. यस और नो. लेकिन अगर आप Yes, sir. -4 x एक्सिस पे लिख रहे हैं तो y एक्सिस पे क्या है? अगर आप पॉइंट ये ले रहे हैं लेट्स से -4 Sir, ले रहे y हैं. में तो ठीक है. positive है. तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या क्या है. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे? Sir, 4. -4 -4 and 0. So now you have in the value y and -x is -4. It's true or false? Sir, true. ट्रू है. ठीक है. अब आपको पॉइंट ऑफ टेस्टिंग से क्लियर क्लियर हो गया. यस. यस. तो ऑफ टेस्टिंग नो ऑडिबल. Am I audible to you class? Yes, sir. Yes. Okay. So can you see the screen properly? Yes or no? Yes, sir. Okay. So now by the time you understand the concept of taking a point of testing, this time you will be given the two inequalities together. Now you tell me how to do it. Point step number one. Come on, quick, quick. What is your step number one? Your step number one is draw the lines showing y is equals to -1. Okay. And your step number two is x is equals to -6. Am I audible to you, class? Yes. Can you hear me, class? Yes, sir. Okay. It's y is equals to -1 since less than sign is there, so I have to go for the dotted line. And x is equals to -6 is again the solid line has been drawn. And yes, for y is less than -1, you tell me which side is going to be shaded, is right or left. And let me highlight the right and left so that you can answer me accordingly. This is your right, this is your left side. You tell me this one, how do I shade this one, right or left?
left. See the see the arrow. See the arrow. It's y is less than -1. And just showing you, I have coded this R and L. See, I have written it on the screen. Can you see? I have written R and L. Is it there? Can you see R and L is written? Yes. Will you be able to see R and L? The letter that I have mentioned over the slides. Yes, class. Class, can you hear me? Yes. Can you see the R and L which I have mentioned to you? It says y is less than -1. Now you tell me which way I need to shade, right or left? So see, Sir, right? okay, that means this has to be shaded. Okay. So according to, and what about x is less than or equals to -6? You need to Sir, shade down. down. So now again you have to perform a task like, how do you do it? Let me tell you. You have to for this inequality, let's say for this inequality, you just go for the diagonal pattern of shading. Okay, and for this inequality you go with backwards pattern of shading, so that you just identify the intersection part of both the shaded areas. Likewise, I started with the y is less than -1. So less than means I need to shade it like this. Yes or no? Yes, class. Am I Yes, sir. shading a right region? Yes or no? No, sir. No. I'm not, according to you, I'm not shading the right region. सर आपने बोला था डाउन साइड वाली मतलब उसको थोड़ा सा स्लैंट होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट. हाँ, डाउन साइड वाली देखें, शेडेड रीजन है ना. शेडेड रीजन मैंने कहा कि डायगोनल आप पैटर्न ले लेना, शेडेड रीजन का डायगोनल पैटर्न ऑफ शेडिंग लें. ठीक है. और एक्स इज इक्वल्स टू, अगर बात हो रही है एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू -6 की, तो अब मैं वो शेडेड रीजन जो ले रहा हूँ, मतलब जो उसका पैटर्न ले रहा हूँ शेडेड रीजन का, शेड करने का जो पैटर्न ले रहा हूँ, वो बैकवर्ड्स शेडिंग ले रहा हूँ. उसका रीजन बेसिकली ये है कि मैं चाह रहा हूँ मुझे वो रीजन मिले कि जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है वो दोनों में, यानी दोनों कोलाइड हो रही हो. अब आप देखें, मोस्ट इंटरसेक्टिंग रीजन आपको शॉर्टेस्ट होना शुरू हो जाएगा. अब मुझे बताइएगा वो जो मोस्ट इंटरसेक्टिंग रीजन है वो कौन सा रीजन है, ये बताइए, जो दोनों, जिस पे दोनों पैटर्न्स इंटरसेक्ट हो रहे हो. वो जो ना रीजन हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा. दैट इज द रीजन ऑफ द सॉल्यूशन सेट. वो कौन सा एरिया है मुझे बताओ. देखिए आपके सामने ये एरिया आ रहा होगा जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. देखिए ये वो पैटर्न नजर आ रहा है जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड पैटर्न्स दोनों मर्ज होने इसमें. ठीक है, जो कि दोनों इनिक्विटी को प्रूव कर रहे हैं कि ये वो रीजन है. इसमें से कोई सा भी पॉइंट लीजिएगा तो वो दोनों इनिक्विटी को प्रूफ करेगा कि वो दोनों इनिक्विटी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों इनिक्विटीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स. पॉइंट ऑफ टेस्टिंग आपने यहाँ से इस रीजन से लेने होंगे. ठीक है.
बहुत आसान है, अब आप गौर से सर हम देखिएगा। लोग सिर्फ पॉइंट शेडेड ऑफ बताएंगे ना, इधर हम लोग क्या सिंबल क्या लिखेंगे? देखें, आप ये देखें, मैंने शेड कर दिया, आपके सामने शेड हो गया, आपके यस सामने मैंने सर। शेडिंग कर दी है। अब इसको मैंने प्रोमिनेंट कर दिया, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब इसमें से कोई भी एक पॉइंट ले लो, फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉइंट एक ले रहा हूँ, लेट्स से, अगर मैं आप एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। आपके सामने मैं पॉइंट ले रहा हूँ, लेट्स से मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ। मैं यहाँ कहाँ खड़ा हूँ, जहां मैंने हाईलाइट किया, मैं कहाँ खड़ा हूँ? मुझे कोऑर्डिनेट्स बताएं जल्दी से, मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए जल्दी से। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? -8 -4। -8 -4। अब आप देखें, अगर पॉइंट ऑफ टेस्टिंग के लिए अप्लाई होने जा रहे हैं ये पॉइंट्स, तो अब आप देखें आपके हिसाब से ये वो शेडेड रीजन है जो आपने शॉर्टलिस्ट किया है, जो दोनों इनइक्वालिटी को प्रूव कर रहा है। अब आप प्लग इन करें इन दोनों को, इसमें और इसमें, ठीक है। आप इसमें भी प्लग इन करेंगे और इसमें भी प्लग इन करेंगे। अब आप देखें y की जगह पे मैं -4 लिख रहा हूँ, y की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ? -4। -4। -4 इज, हाँ, -4 इज लेस देन -1, विच इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अच्छा, अब इसमें मैं प्लग इन कर रहा हूँ एक और, देखिएगा आपके सामने, -8 इज लेस देन इक्वल टू -6, विच इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो अब आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये वो शेडेड रीजन है जो कि हाईलाइट होके सामने आ गया कि वो इनइक्वालिटीज को प्रूव कर रहा है, ठीक है? यस और नो? इज इट क्लियर टू यू? यस सर। क्या आपको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? यस और नो? अच्छा, यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज गिवन है, बाद औक़ात तीन इनइक्वालिटीज गिवन होती हैं, बाद औक़ात चार इनइक्वालिटीज गिवन होती हैं। तो आप उसमें क्या करें कि अपने पैटर्न्स को चेंज रखें। अब लेट्स से आपने एक पैटर्न अगर फॉरवर्ड डायगोनल ले लिया एक एक इनइक्वालिटी के लिए, दूसरा पैटर्न ये ले लिया, तीसरा हॉरिजॉन्टल ले लिया और चौथा वर्टिकल ले लिया। अब जो मोस्ट इंटरसेक्टिंग पैटर्न बन रहा होगा ना, जहां पे वो इन चारों इनइक्वालिटीज को प्रूव कर रहा होगा कि वो सेटिस्फाई कर रहा है तमाम तर वो पॉइंट्स जो कि इनइक्वालिटीज के अंदर जो है आप प्लग इन करेंगे तो वो प्रूव करेगा कि ट्रू आएगा। राइट? इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? यस सर। ठीक है, ऑलराइट। अब आपके सामने ये वाला एरिया आ गया, शेडेड रीजन। अच्छा, अब तो बस मतलब अगर आप देखें, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन दिया जाए, दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू यू, सबसे पहला काम करेंगे y इज इक्वल्स टू x+3। तो आपने एक जनरल तरीका ये होता है कि कोई भी आपने पॉइंट्स ले लिए 0 1 2, उसको लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब आपने आराम से बताना है कि वो कौन से, अब मुझे बताइएगा कि शेड अप होगा या डाउन होगा? जी, शेड अप होगा या शेड डाउन होगा? कौन बताएगा? डाउन। शेड डाउन होगा, बिल्कुल। अब आप देखें, अगर शेड डाउन होगा और पॉइंट ऑफ टेस्टिंग में ट्रू के लिए पॉइंट ऑफ टेस्टिंग में शेडेड रीजन से लूंगा या अनशेडेड में से लूंगा? शेडेड। शेडेड से। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, यस और नो? यस सर। यस। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा यहाँ पे? व्हाट इज स्टेप नंबर 1? y इज जल्दी इक्वल्स टू बताइए। 5 - x। ठीक है, उसके बाद में मैंने छोटा सा टेबल ले लिया और इसको मैंने अपने रैंडम वैल्यूज ले ली और प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के फौरन बाद मैंने वो लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि सॉलिड लाइन तो नहीं बनेगी। रीजन इज दिस के इस ग्रेटर देन लिखा हुआ है सिर्फ,
अब मैं शेड अप करूंगा या डाउन करूंगा? अप। शेड अप करूंगा। ये शेड आप अप हो गया। पॉइंट ऑफ टेस्टिंग में शेडेड रीजन से लूंगा या अनशेडेड से लूंगा? शेडेड। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। अब आप देखें, ये दोनों को मर्ज कर दिया हमने। अब दोनों को मर्ज कर दिया, अगेन द सेम सिनेरियो। सबसे पहले इक्वेट करके आपने कोई भी रैंडम पॉइंट्स ले लिए यहाँ पे, ये आपने ड्रॉ कर दी एक लाइन, ये दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी आपके सामने है। देख लिया आपने, दूसरी लाइन आपने ड्रॉ कर ली। अब आपने क्या करना है, शेडेड रीजन करना है। शेडेड रीजन का मतलब ये कि लेस देन। सबसे पहले तो y इज लेस देन 2x की लाइन पे शेड अप होगा, शेड डाउन होगा? डाउन। शेड डाउन। शेड डाउन हो। अच्छा, शेड डाउन अगर मैं कह रहा हूँ तो मैं चलें इसको, मैं इस बार इस इनइक्वलिटी को शेडेड पैटर्न जो दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, ये वाला। ठीक है, लेट्स से मैं ये वाला पैटर्न ले रहा हूँ, और इस इनइक्वलिटी के शेडेड रीजन को हाईलाइट करने के लिए वर्टिकल, एग्जैक्टली वर्टिकल पैटर्न ले रहा हूँ शेडेड रीजन शेड करने के लिए ना। अब y इज ग्रेटर देन 2, y इज लेस देन 2x है। y इज लेस देन 2x पे मैंने आपको कहा था कि मैंने पैटर्न कौन सा लिया है बेटा? शेडेड पैटर्न कौन सा लिया है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लिया है। हॉरिजॉन्टल आपके सामने देखें, स्क्रीन पे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ स्क्रीन पे शो हो रहा है आपके? यस सर। ठीक है, अब आप देखिएगा गौर से। अच्छा, ये हो गया। और y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स के अंदर मैंने क्या कहा है, ग्रेटर देन का मतलब कहाँ शेडेड होगा, डाउन या अप होगा? अब बस अब अप। अब बिल्कुल अब होगा। अब के लिए मैंने एक पैटर्न बताया था, वो है वर्टिकल पैटर्न। ये वर्टिकल पैटर्न कर दिया। अब आप मुझे बताइएगा कि वो कौन सा एरिया है जो कि मुझे शॉर्टलिस्ट करना है। ठीक है, देखते हैं कौन बताता है मुझे। जी सर जहाँ पे अभी आपका कर्सर है। जी। और आप इसको यूं भी कह सकती हैं बेटा कि सर जहां दोनों पैटर्न्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जहां दोनों पैटर्न्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो एरिया एक्चुअली द रिक्वायर्ड रीजन है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। किसको सेटिस्फाई कर रहा है? इन दोनों इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। गॉट इट? यस और नो? यस सर। हाँ, अब आप देखें आखिर में इसको फिर आप सिर्फ और सिर्फ इसको हाईलाइट कर सकते हैं इसी तरीके से। यस और नो? आसान है? इज इट इजी और नॉट? अब आप देखें, ये अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, सब के सब क्वेश्चंस, क्योंकि बेसिक्स आपकी क्लियर हो गई। ये बेसिक्स क्लियर हो गई, अब आपको पता लग गया पॉइंट ऑफ टेस्टिंग के हवाले से, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में आ गए। ठीक है, प्लॉटिंग द ग्राफ आपको आता होगा। ग्राफ के अंदर इनइक्वालिटीज को कैसे मतलब हम देख रहे होते हैं, और रीजन्स जिसको हम सेटिस्फाई करते हैं दो इनइक्वालिटीज में, वो आपको आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इसकी पिक्चर ले लीजिएगा, और ये फिर आपने घर पे करना होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, बस अब ये आज का लेक्चर यहाँ तक एंड हुआ। अब आपने क्या करना है, पास पेपर के क्वेश्चंस जो है ना इनइक्वलिटीज के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के करना शुरू कर देने हैं। उसके अंदर देखें, इनइक्वलिटीज के अंदर आपके जो पास पेपर क्वेश्चंस होंगे तो उसमें अगर वो कह रहा है लीव अनशेडेड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको। लीव अनशेडेड रीजन विच सेटिस्फाई द रीजन। अनशेडेड का वर्ड अगर आ जाता है, ठीक है, अगर लिखा हुआ अनशेडेड, तो मतलब जो आपकी जो नॉर्मल शेडिंग हो रही है ना, जैसे अगर एरो अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल अनशेडेड दिया हुआ है और इनइक्वलिटीज दो गिवन है, तीसरी इनइक्वलिटी खुद से पता नहीं होगी वो कौन सी है। अच्छा, मैं आपको अभी जैसे कि ये लेस देन दिया हुआ है, अनशेडेड में ये वाइस वर्सा हो जाएगा। मतलब इसको, इसकी शेडिंग जो ना आप इस तरफ नहीं करेंगे,
क्योंकि कीवर्ड को देखेंगे, कीवर्ड आगे अनशेडेड। अगर वो लिखा हुआ हो शेडेड, अगर लीव योर शेडेड रीजन विच सेटिस्फाई इनइक्वलिटी, तो फिर आप समझ लो कि फॉलो क्या करोगे, फॉलो करोगे नॉर्मल एरो टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी, याद है? जिस जगह एरो बन रहा है उसी जगह पे नॉर्मल एरो टेक्निक होगा, जहां पे एरो जा रहा होगा वहां शेड होगा। यस और नो? या पॉइंट ऑफ टेस्टिंग को यस सर। देखते हुए आप जो है ना शेडिंग कर दीजिएगा। अगर वो लीव अनशेडेड रीजन लिखा हुआ हो, अगर लिखा हुआ लीव अनशेडेड रीजन विच सेटिस्फाई इनइक्वलिटी, तो आप नॉर्मल शेडिंग नहीं होगी, बल्कि ये वाइस वर्सा ऑफ नॉर्मल शेडिंग होगी। वाइस वर्सा ऑफ नॉर्मल शेडिंग पता है क्या होती है? समझ लीजिए कि अगर आपका एरो जा रहा है लेफ्ट की राइट की तरफ, वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा में यही होता है ना, आपको पता है ना वाइस वर्सा में क्या होता है? उलट हो जाता है। मतलब अब देखें फॉर एग्जांपल, अगर लिखा हुआ है जैसे कि लेस देन, अब मुझे पता है कि मैंने कहाँ जाना है, राइट साइड जाना है, तो लेकिन अगर वाइस वर्सा में आ गया क्योंकि अनशेडेड कीवर्ड है, तो अब आप शेड जो करोगे वो इस तरफ करोगे, ये हो गया शेडिंग, ये शेडेड पार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अनशेडेड कीवर्ड आ रहा है। अगर यहाँ पे शेडेड होता और यही चीज यहाँ पे शो हो रही होती, तो मैं अब आप देखें आपके सामने जो शेड करूंगा वो क्या करूंगा, अब आप देखिएगा शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन है। गॉट इट? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? कि अगर आपके पास कीवर्ड लिखा हुआ है कि लीव योर शेडेड रीजन विच सेटिस्फाई इनइक्वलिटी, तो नॉर्मल शेडिंग होगी। अगर वो लिखा लीव अनशेडेड रीजन विच सेटिस्फाई इनइक्वलिटी, तो आप वाइस वर्सा ऑफ एरो टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी, वाइस वर्सा ऑफ एरो टेक्निक, याद रहेगा आपको? मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। क्लास, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। Yes, sir. अच्छा हाँ, अब तो फिर आप देखें, आप इसी इसी की वजह से, अगर देखें आप पास पेपर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं ना इनइक्वलिटीज की, तो आपने इन दोनों कीज को बड़े अच्छे से इसकी पिक्चर भी ले लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि मैंने आपको क्या बताया था। ठीक है? और फिर ये प्लेनरी वाला क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। और बस आज तक तो इतना ही तो हमने आज आपको कॉन्सेप्ट बताए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हवाले से। और चलें, मुझे ये आपसे मैं जान लेता हूँ, व्हाट हैव यू डन टुडे? आज हमने क्या क्या किया? सीनियर नईम, कैन यू हेयर मी? सीनियर नईम को आवाज आ रही है मेरी? उम्मे सलीत, कैन यू हेयर मी? यस सर। उम्मे सलीत, थोड़ा सा समराइज करो क्लास को। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप समराइज करो, और हफ्सा आशमी जो है वो ग्राफिंग ऑफ इनइक्वलिटीज को समराइज करेंगे। ठीक है, कंक्लूड करेंगे जल्दी से। स्टार्ट, ओवर टू उम्मे सलीत। यस प्लीज। Sir, we learned about coordinate geometry and how to find the distance between 2 points. The formula, we can also use Pythagoras theorem, and we can also use the formula of y2 minus y1 square plus x2 minus x1. We also learned about midpoint and how to find out midpoint. It is rise over run, or you can also use x2 x2 minus x1 upon 2, or y2 minus y1 upon 2 to find x and y. And then we talked about equation on straight line y intercept. The formula would be y is equals to mx plus c. But we should find out the equation on straight line. जैसे हमें हमें पता होना चाहिए कि मतलब ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट का हमें पता होना चाहिए, ताकि हम लोग जो है इक्वेशन ऑन स्ट्रेट लाइन निकाल सकें, और उसको जो होता है हमें ग्राफ से ही फाइंड करना होता है। यस। ऑलराइट, अब नेक्स्ट इज हफ्सा आशमी, जिनकी लाइट चली गई होगी यकीनी तौर पे, या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया होगा इस वजह से ही चली गई हैं। तो अब मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ। ग्राफिंग ऑफ इनइक्वलिटीज के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न किया कि फ्लिप कंडीशंस हमने पढ़ी थी कि जब कभी भी माइनस साइन आ जाता है, जब डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो रहा हो वेरिएबल के साथ, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी इज गोइंग टू फ्लिप, राइट?
अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू है तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो जाएगा। अच्छा, लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर डॉटेड लाइन यूज होती है व्हाइल ग्राफिंग द इनइक्वालिटीज, और लेस देन और इक्वल्स टू और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के हवाले से अगर बात करेंगे तो सॉलिड लाइन यूज होती है। अच्छा, डिपेंड करता है वो कीवर्ड पे कि अगर वो कह रहा है कि लीव show the satisfy the region of inequalities which is given, अगर ये कह रहा है तो वो तो सिंपल नॉर्मल शेडिंग की बात कर रहा है। अगर वो कह रहा है कि लीव द शेडेड रीजन, तब भी नॉर्मल शेडिंग की बात कर रहा है। अगर वो सवाल में कह रहा है लीव अनशेडेड रीजन, तो मतलब वो नॉर्मल शेडिंग से वाइस वर्सा हो जाएगी। मतलब जो अगर लेस है, नॉर्मल शेडिंग में हम क्या कर रहे थे कि लेस देन है और लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है तो लेस का मतलब डाउन शेड कर रहे थे। लेकिन अगर वो लीव अनशेडेड की बात कर रहा होता था ना अगर क्वेश्चन के अंदर, तो वो फिर आप लीव मतलब वो शेड अप कर देते, मतलब वाइस वर्सा कर देते। मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड के ऊपर शो किया हुआ है, इसकी की शो की है ताकि आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट आ जाए। राइट, आप में से जिसने क्लास अटेंड की है दैट्स गुड, और जो नहीं कर पाया ड्यू टू सम जेन्युइन रीजन, तो वो मेरे रिकॉर्ड लेसन्स को जो है वो रिकॉर्ड लेसन को अप्रोच करते हुए पूरी वर्कशॉप को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्लियर किए हैं, साथ में इनइक्वल ग्राफिंग ऑफ इनइक्वालिटीज कवर करने की कोशिश की है, और पास्ट पेपर के क्वेश्चंस जो है ना आपने खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करके फिर जो भी कोई क्वेरी हो तो फिर हम डिस्कस टाइम टू टाइम करते रहेंगे। ठीक है, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू आस्क? ऑल क्लियर? यस, ऑल क्लियर? उम्मे सलीद, Yes, उदैसा, sir. सनिया, उदैसा कोई क्वेश्चन? सनिया नईम? नहीं सर। ऑलराइट, सनिया नईम कोई क्वेश्चन? ओके, एनीवेज, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, see you in the class Allah मतलब Hafiz, on sir. site classes, okay, inshallah, okay, अल्लाह हाफिज।